ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर डिजिटल मोड से, तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के केस में और 8% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस के केस में। सो अगर आप इफ यू बाय योर पॉलिसी एंड फ्रॉम द कस्टमर पोर्टल एंड पे बाय द डिजिटल मोड directly and not by cash, the policy will be, the premium will be 10% less in the case of general insurance and 8% in the case of life insurance. हर प्रीमियम पे ये सब नई पॉलिसीज में होगा, नई पॉलिसी जो ऑलरेडी चल रही है वो रिन्यूअल न्यू पॉलिसी सोल्ड। ऑन द फर्स्ट पॉलिसी। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या सेंट्रल पीएसयूज हैं, वो इंश्योर करेंगे कि उनके साथ जितने संबंध लोगों के हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन फीस और एमडीआर चार्जेस जो डिजिटल पेमेंट में कई बार इन्वॉल्व रहते हैं, उसका बोझ किसी कस्टमर के ऊपर न आए। सो इफ यू आर डीलिंग विद गवर्नमेंट और पीएसयूज and you make payments on by the digital mode, the transaction fee or the MDR charges, the governments will ensure that these are not leviable. So this is on state governments as well? Central PSUs. I've said central government and central PSUs. PSU banks ने कई एस्टैब्लिशमेंट्स को, लाखों में एस्टैब्लिशमेंट्स को पॉस टर्मिनल्स, माइक्रो एटीएम्स, मोबाइल पॉस टर्मिनल्स, ये सारे प्रोवाइड करते हैं और वो डिजिटल पेमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। पीएसयू बैंक्स ये इंश्योर करेंगे कि इनमें से कोई भी ये सुविधा डिजिटल पेमेंट की जो प्रोवाइड करेंगे, पीओएस टर्मिनल्स, माइक्रो एटीएम्स, मोबाइल पीओएस, उनका जो रेंटल है, किराया है, वो 100 रुपए महीने से अधिक ना हो। तो द कैप ऑफ 100 रुपीज विल बी देयर। आज ऑलरेडी 6.5 लाख मशीन्स जो पीएसयू बैंक्स ने प्रोवाइड किए हैं, 6.5 लाख मशीन्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय पीएसयू बैंक्स आर एग्जिस्टिंग टुडे, मोर विल बी प्रोवाइडेड। सो इवन द एग्जिस्टिंग मशीन्स will be entitled to this cheap rent facility. आज मैंने दोनों सदनों में ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन सरकार का रखा है कि 2000 रुपए तक की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल मोड से, उन पे सर्विस टैक्स नहीं होगा। ये ऑलरेडी पार्लियामेंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड टुडे ऑफ दिस। और जो अंतिम निर्णय इस रिगार्ड में है, कि जो टोल प्लाजास पे, नेशनल हाईवेज में फास्टैग या आरएफआईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी डिजिटल पेमेंट करेंगे, द यूजर ऑफ दैट, उस पे भी उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो नेशनल हाईवेज पे जितने टोल प्लाजास हैं, उन टोल प्लाजास के यूज करने के लिए, टोल के लिए आरएफआईडी कार्ड या फास्टैग्स होंगे जिनके पास, और उसकी पेमेंट वो डिजिटल मोड से करेंगे, तो उनको वो 10% डिस्काउंट यानी सस्ता मिलेगा। कैश विल कॉस्ट, द कैश कार्ड्स विल कॉस्ट मोर देन द डिजिटली पेड कार्ड्स। तो ये
11 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो सरकार ने आज लिए हैं। वैसे ये लगभग तुरंत लागू हो जाएंगे। उसके जो औपचारिक नोटिफिकेशंस या ऑर्डर्स हैं उस दिशा में कंसर्न विभाग इसको इशू करेंगे और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि जो मौजूदा स्थिति में कैश के स्थान पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे सरकार का एम्फेसिस है, इसके माध्यम से उसको और तेज किया जाए। वी वांट टू कैटलाइज दैट होल प्रोसेस। Sir, there are 11 announcements that you have made, sir. How much lesser cash will now be, used through all these announcements? You see, we Is there are- any assessment that the government has made? You see, we were using as of 8th November excessive amount of cash and a very, very limited amount of digital transactions. As I mentioned in my opening comment, there is a cost of transacting in cash. And that cost of transacting in cash has to be borne by the economy. It has also to be borne by the political system. These are costs which are visible, these are costs which are invisible. Excessive cash can also lead to a lot of malpractices. And therefore, in the long run, we are using this also as an opportunity to move towards digitization. Now, in almost industry after industry, service after service, the feedback we are getting is that this movement is quite rapid. Now, how much are we eventually able to stop at? This is a matter of final calculation. I don't want to speculate at the figure. But this will certainly make India into a less cash economy. MDR चार्ज डिस्काउंट पर ट्रांजेक्शन पर रुपए ले रहे हैं अभी। MDR चार्ज हटाने के बावजूद भी 31 दिसंबर तक पेट्रोल पंप पर ट्रांजेक्शन 15 रुपीज ले रहे हैं अभी भी। देखिए, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस शिकायत को हम लोग देखेंगे, मगर अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो फिर उसके साथ जो भी कंसर्न ऑयल कंपनीज हैं उस पेट्रोल पंप के साथ डील करेंगी। सर डिस्काउंट बेयर करेगा। How long will these incentives be offered? Is there any end date? No, there is no end date which we are mentioning just now. Sir, who will bear the cost of these discounts? You see, the cost of these discounts will be borne within the by each of the organizations, because most of these discounts are being offered by bodies which are either central government run or are PSU units. Now, how the government deals with each one of them is a matter internal to the government. So will the fuel discount also be passed on through private fuel retail outlets, or will this be limited? No, I have said because it's only the PSUs which have taken this decision. The private ones are to decide in the world of competition what they are to do. They are free to sell costlier petrol and face the consequences of the market. So what are the revenue implications of removing service tax below 2,000 rupees? Are there significant costs? I don't think it can be quantified. Not at this moment, but we will there would be a revenue consequence of every decision. Sir, have you Nearly 70% of the transactions are below 2,000. Sir, And you see, since this process has just started, those exact accurate data are not Sir, available. have you thought about encouraging digital payments for funding of political parties? Can I tell you, this would inevitably be a future course. And I think if it becomes digital, if it becomes smaller donations, if it becomes lesser donations from a larger body of donors, it will be a great day for Indian democracy. And when I was repeatedly saying the cost of dealing in cash are both to the economy and the political system, this is one of the factors that I had in mind. After all, internationally, if you've seen in large democracies, you have literally lakhs and millions of people donating small amounts online to political parties. Sir, RBI has received more money than expected. What is that mean? Look, I let the final figures come. I may only clarify that merely depositing money in a bank doesn't mean that it changes color from black to white.
its tax liability would still remain because what is unexplained will still remain taxable. And therefore, what is deposited in the bank will be closely scrutinized to determine the tax liability on that money. So, sir, are you saying that there is a lot of black money has been deposited in banks? No, I am not saying that, but ultimately it's for the revenue officials of the tax department to determine. The mere fact that money has come into the bank doesn't make it change colors. But sir, would you agree that your claim the Attorney General gave to the court that only you... I am not making stands any, false? Nikki, I am not making any comment on any claim. These are only No, sir, this was potential. government's claim because you initially said No. there's a lot of black money. The government kept saying, and now you're changing goalposts, you're moving to digital. You see, anybody would be too naive to believe that there was no black money in India. No, sir, but actually the money. We is knew, not black. we live in a real world. And therefore, how much of it is there will depend on how much of it is explained and how much is not explained. सर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे सर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे एमडीआर ऑलरेडी आपने 31 तक वेव कर दिया, तो जो सर्विस टैक्स हटाया गया है तो वो तो सर्विस चार्ज पे ही लगता था, तो वो एक तो वो सर्विस चार्ज पे ही लगता था, तो वो एक लॉजिकल मूव हुआ ना इसका। नेक्स्ट स्टेप तो यही हुआ ना सर। नेक्स्ट स्टेप यही है। चेन्नई से waivers, exemptions, discounts which you have announced today. Now, a lot of people will be waiting whether these are long-term measures or short-term. At the moment, I have not announced any end date. It's a part of our campaign to incentivize people, So this to persuade people, to incentivize people, and I think incentivizing people to go digital and shed cash to the extent it is possible is a good development for the economy. For example, this transaction surcharge and others which were announced earlier, waiver. सर डिजिटल को बढ़ावा देने के अलावा लोग कह रहे हैं ये भी कि जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको इंसेंटिवाइज किया जाए। देखिए, आज जितना निर्णय सरकार ने लिया मैंने आपको बता दिया है। सर चेन्नई में आईटी विभाग ने 70 करोड़ नए नोट पकड़े हैं, तो ये जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है बैंकिंग सेक्टर पे कुछ नहीं, वो इनके प्रश्न का उत्तर देता है जो कह रहे थे कि ब्लैक मनी कितनी है। Also, but the banking system is itself involved. You've seen so many branches. So they will be, you see, if somebody misconducts himself, he'll be held accountable. After all, there are bank officials who are being held accountable. If more complaints come and more evidence comes, certainly they'll be brought to book. So the service tax exemption up to 2,000 rupees that applies also to net banking or is it only to card transactions? All digital transactions. And so, any revision on the limits that could happen? Maybe? अभी Thank you.